उस मोमेंट को, उन डेज को यूटिलाइज करने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, विल बी हैविंग अ क्विक डिस्कशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीजें पता चलने के लिए यू जस्ट रिक्वायर 1 or 2 hours। सो ये जितना जल्दी ये 1 or 2 hours निकाल लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आप आगे कंटिन्यू किस तरीके से करोगे, राइट? आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। एक महीने बाद जाके पता चल रहा है कि नहीं यार, मेरा तो आधा ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, then it will be difficult for you to correct yourself. So this is very important thing about the mock papers. ये 4 words है ना, इनको रट लो। Hello my dear aspirants. Now my dear friends, we are only a few months away from our exam, or I should say not a single examination, but we have mainly 3 important examinations that we are targeting, which are IPMAT Indore, IPMAT Rohtak and JIPMAT. एंड आई बिलीव दैट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी एग्जाम्स टारगेट कर रहे होंगे, लाइक सिम्बाइसिस एंड एनपैट, SET and NPAT. So friends, what should be a strategy starting from the month of December till the month of May so that we can crack each of these examinations? We'll be discussing each and everything in today's session. ऑल्सो अभी इस वक्त आप लोग डिफरेंट स्टेटस होगा आप सबका। आई वुड से दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर IPMAT एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी 2 months 3 months पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले मंथ्स में आने वाले हैं, February March में बोर्ड एग्जाम्स होंगे। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बोर्ड एग्जाम्स की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी क्लियर 12th स्टैंडर्ड इन 2025 and they are going to repeat this examination. So different status होगा at present. So overall आपको क्या strategy use करनी चाहिए, even if you are a beginner here or you have already covered some distance or you don't have board examinations to take care of. So जिस moment पे, जिस time पे जो स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में है वो अपने बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे होंगे, सो उस मोमेंट को, उन डेज को यूटिलाइज करने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, विल बी हैविंग अ क्विक डिस्कशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट शुड बी देयर एट द बिगिनिंग। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो द एग्जाम्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, one of them is IPMAT Indore, right, which will happen somewhere in the month of May. So if we'll take the reference from the last year 2025 में जो ये एग्जाम्स हुए थे, अब 2026 के लिए ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, कुछ एग्जाम्स की डेट्स आनी बाकी हैं। So IPMAT Indore is the first exam that we'll have to write. Now our second target will be IPMAT Rohtak and the third target will be JIPMAT. Now other than these 3 examinations, we have, I can say, 2 more exams that we can think about: Symbiosis Entrance Test and NPAT, which is conducted by Narsi Munji, which is situated in Mumbai and has a lot of campuses across India. So these are primarily 5 very important examinations that we are targeting for, right? So this is what we are preparing for. The next thing is we need to understand the pattern and the syllabus of each of these exams, right? So if I talk about pattern and the syllabus, what all it includes, or how should we be able to understand the pattern of each of these exams? तो सबसे पहला step क्या है? You should be knowing about the number of questions that appeared in these exams in the last 4 to 5 years. तो अगर मैं 4-5 साल के पेपर्स को properly study कर लेता हूं, overall pattern, overall number of questions and section wise number of questions as well, then it will be very easy for me to prepare for these examinations. अब ये कोई बड़ा टास्क नहीं है. This will take hardly 2 to 3 hours. इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, and I'm also going to help you this thing about this thing in the next 10 to 15 minutes. ठीक है? तो सबसे पहले तो चीज आ गया number of questions, then the complete syllabus for IPMAT Indore, Rohtak and JIPMAT exam. And if you are targeting other exam, तो उसका भी syllabus पता होना चाहिए, section wise syllabus पता होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन कौन से एग्जाम में है, कौन से एग्जाम में नहीं है, DI के क्वेश्चंस कहां पे पूछे जा सकते हैं, कहां नहीं पूछे जा सकते। सो ये कंप्लीट बाइफर्केशन क्लियर होना चाहिए माइंड में, राइट?
And next thing is the pattern of each examination. So pattern, I mean to say the number of sections, the number of questions in each section, including the syllabus, the type of questions, then the marking scheme, sectional time limit है या फिर नहीं है, negative marking है या फिर नहीं है. So you should have a clarity about each and every examination because one very small thing changes a lot of things. All right, fine. अब जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये सब चीजें पता चलने के लिए यू जस्ट रिक्वायर 1 or 2 hours. सो ये जितना जल्दी ये 1 or 2 hours निकाल लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न्स ऑफ दीज 3 मेन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस, इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट. सो आई हैव डन द वर्कआउट फॉर ऑल ऑफ यू. सो जल्दी से एक बार नजर मार लेते हैं. सो IPMAT इंदौर इज डिवाइडेड इन 3 different sections: quantitative aptitude subjective, quantitative aptitude where MCQs will be there, and verbal ability. Now each of these sections will have a sectional time limit of 40 minutes. Now first section, quantitative ability, where you will have subjective questions, will have 15 questions. Quant MCQs will have 30 questions and verbal ability will have 45 questions, right? So you can say that there will be a total of 45 questions in quant and 45 questions in verbal ability. Now each correct answer will fetch you 4 marks. Every incorrect answer will have a -1 marking. Also you need to understand that ये जो subjective questions हैं इनमें negative marking नहीं होगी. So in QA, SA section will not have any kind of negative marking. So this is a little bit about the pattern of Indore. I'm not digging deep into the syllabus of all the 3 sections because here we are discussing what to do as far as LRDI section is concerned, right? Now moving on to Rohtak. In Rohtak logical reasoning section, you will see a separate section on logical reasoning having 40 questions, right? So 40 questions in each of these 3 sections, and you will be given sectional time limit of 40 minutes for each of these sections. Also +4 for correct, -1 for wrong, and all questions will be MCQs. There will not be any question which will be subjective. Now going back to Indore. Now Indore में आपने logical reasoning का section नहीं देखा, but every year we find 5 questions in this section. So out of 30 questions, you will have 5 questions on logical reasoning or data interpretation, right? So yes, LRDI is also important from the point of view of IPMAT Indore exam. Now the third exam that we are targeting is JIPMAT, right? Now JIPMAT again has 3 sections. First section, 33 questions in quantitative aptitude, 33 questions in data interpretation and logical reasoning, and 34 questions in verbal ability and reading comprehension. Overall 100 questions. Now every question +4 for the correct answer. Now if you look at the marks, so +4, so 33 into 4 is 132. You can easily calculate this particular thing. Now here you will not see any kind of sectional time limit. So the overall duration of the exams is 2 hours 30 minutes or 150 minutes, right? And definitely this is a computer based examination, right? So this was about the pattern of these examinations. Now talking about the syllabus, what comes in logical reasoning and data interpretation, if I combine all the 3 examinations. So if you'll work on all the topics which are written on the screen, then you are through. Then you can tackle each of these 3 examinations, logical reasoning, data interpretation section of each of these 3 examinations, as well as if you have LRDI in any of the exams, which we have, yes, SET का जो exam है and NPAT का exam है, you will definitely find questions from logical reasoning and data interpretation. So this is the entire syllabus, and yes, we have covered each and everything in the classes. All right. Now here we are to understand what should be our strategy for the next 5 months. So December, January, February, March, April, May में एग्जाम है. So April तक हमारी क्या strategy होनी चाहिए overall? Let's understand that. All right. Now first of all, the beginning for a lot of students right now, it must be the beginning. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, राइट? सो द बिगिनिंग फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी एनर्जेटिक. You have to give more than 100% at the beginning.
गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत अच्छी नहीं होती, बाद में लेटर स्टेजेस में बोर्ड एग्जाम्स के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट 1 month इज नॉट इनफ टू गिव दोज मेनी एफर्ट्स so that it will prove fruitful in the examination, right? अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी, स्टार्टिंग में एनर्जेटिकली आप सारी चीजें टैकल करना शुरू कर दोगे, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दोगे, then it will be beneficial for all of you. And over the years we have seen the students who have started early, they have performed well in this examination. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन. नाउ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग इनटू IIMs. ओके, तो अगर अभी से ही स्टार्ट कर दोगे देन इट विल बी बेनिफिशियल, राइट? सो व्हाट शुड बी डूइंग एट द बिगिनिंग? वी अंडरस्टैंड दैट स्टार्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हो, ये सब कुछ डिसाइड करेगा आप आगे कंटिन्यू किस तरीके से करोगे, राइट? आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी, राइट? सो वी कैन से दैट यू कैन बी बाहुबली ऑफ योर प्रिपरेशन एट द बिगिनिंग इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बाहुबली एट द एंड. बिगिनिंग में अगर बन जाओगे तो लास्ट में आराम से सब कुछ चीजें टैकल हो जाएंगी, ठीक है? सो स्टार्टिंग में दिसंबर का मंथ है, जनवरी का मंथ है बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो give more efforts, like put in more amount of hard work in these months and try to finish your syllabus as soon as possible, right? So what you have to do is, if you haven't started your preparation, you need to focus on basics and fundamentals. Now logical reasoning में अगर आप topics देखोगे, blood relations, series, Venn diagrams, coding decoding, direction senses, clocks, calendars, बहुत easy topics हैं. Okay, so I'm not asking you to prepare at the level of the examination, but basics and fundamentals इन चीजों पे वर्क कर लो. जो बेसिक क्लासेस हैं उनको जल्दी से अटेंड कर लो, एंड उनके बेसिस पे अगर 10-15 क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व करके रख दोगे, then it will be done. You will be through, and बोर्ड एग्जाम्स के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, राइट? बट अगर अभी आप बेसिक्स नहीं समझोगे, राइट, इफ यू नॉट वर्क ऑन योर बेसिक्स इन दिस मंथ, then after board examinations you will have to start from the basics, then practice, then test series. Everything should be done, or everything you will have to manage in a matter of 1.5 month. And वो difficult होता है, believe me, it is actually I would say a lot of pressure will be there at that time. Okay, so basics and fundamentals पे work कर लो. Clocks का topic है, clocks में जो basic formulas हैं, the speed of the minute hand, the speed of hour hand, इन चीजों पे वर्क कर लो. कैलेंडर्स की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस चीज पे वर्क कर लो. ब्लड रिलेशंस में बेसिक फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल्स दैट वी कैन यूज so that we can reduce the amount of confusion while drawing the family tree. सीरीज में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, किस किस टाइप की सीरीज होती हैं. If you'll work on all these things in this month, then a lot of things will be sorted after board examinations, right? So focus on your basics and fundamentals. Also, at this time you can make short term and long term goals. So short term goals, long term goals, दोनों का मतलब क्या है ये समझते हैं, right? Now first of all I'll make a long term goal. So long term goal, that means I'll categorize some of the topics of logical reasoning. I'll pick up data interpretation, data sufficiency, then critical reasoning. So we have different areas that we'll have to finish in this section. Okay, so एक category बना लिया. Let's say critical reasoning. So critical reasoning, you set a long-term goal of, let's say, 15 days, right? Or the entire section of LRDI, let's make a long-term goal that I'll have to finish it in the next 1 month. Now this can be replicated to other sections as well. Quant का section है arithmetic. Arithmetic, let's say आप बोलो कि 15 दिन में सारे basics complete करने हैं. So that is called a long-term goal. 15 days, 1 month, 2 months, long-term goal. Now, if you will not break this entire target into smaller chunks, then it will be very difficult for you to adhere to the timelines, adhere to the deadlines. Okay? So आप बोलोगे यार 1 महीने में मुझे कंप्लीट करना है, बट 1 मंथ को भी प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा. यू विल हैव टू ब्रेक द एंटायर मंथ इनटू स्मॉल पोर्शंस. लेट्स से 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स.
and that will be called the short term goal. Okay, so let's say entire LRDI आपको 1 month में complete करना है, but इस केस में भी आप क्या करो, 4 टॉपिक्स का बंडल बना दो and make sure that you set short term goals of these small bundles. So let's say coding, decoding, सीक्वेंस एंड सीरीज. सो सीरीज में हर टाइप की सीरीज आ जाएगी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, एनालॉजीज, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म, फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म, राइट, फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म. तो इन सबको एक बंडल में डाल दो. नेक्स्ट ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इनका एक बंडल बना दो. सो लाइकवाइज 3-3, 4-4 चैप्टर्स का एक बंडल बनाओ and give yourself a short term targets of 3 to 4 days कि भाई 3 to 4 days में complete करना है. Now what will be the advantage of making short term goals is in case you have any kind of deviation, then deviation अगर 3 दिन का टारगेट दिया है और 4 दिन लग रहे हैं तो आप क्विकली इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्विकली करेक्शन कर सकते हो अपने नेक्स्ट टारगेट में. बट अगर आप 1 महीने बाद जाके पता चल रहा है कि नहीं यार मेरा तो आधा ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, then it will be difficult for you to correct yourself, right? So that's why with long term planning, short term planning is also important, and the most important thing is to adhere to the deadlines को हमें meet करना है, right? Timely हमें complete करनी है सारी चीजें. So that's why it is very important, right? Now moving on to the next phase will be practice. अब बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, फंडामेंटल्स पता है, तो अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो जो हमने फाउंडेशन बनाई है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू करोगे तो बिल्डिंग बन तो जाएगी बट कुछ ही टाइम बाद कोलैप्स हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस. सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट स्टेप इज अगेन प्रैक्टिस, एंड इसके बाद भी प्रैक्टिस ही करनी है. सो वंस यू नो ईच एंड एवरीथिंग, द कंसेप्ट्स, द फॉर्मूलाज, द फंडामेंटल्स, right, then practice will take you ahead and will take you at the top. All right, अब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है तो ये भी ध्यान से करना है, right? So what you have to do is, in order to gain that momentum that you have already built up, so practice is the key to the success. You will have to go through all the class tests, the module tests, as well as sectional tests. Class tests, which are topic wise tests. Module test, let's say entire arithmetic का test, data sufficiency का test, right? So attempt these kind of tests. And then the entire section. So entire section of quant, entire verbal RC, entire logical reasoning and data interpretation together. Okay? So this is how you'll be testing yourself, and during testing, you will come across your weak areas, and this is how you will be improving yourself. जब तक मुझे अपने वीक एरियाज के बारे में नहीं पता है, I will not be able to work on them. So during these tests, you will get to know your weak areas, and this is the time to start working on your weak areas. Now the next stage is the conclusion. Now for all of you, this stage will come in the month of I would say late March or the month of April, because from the month of May we'll be starting with the examinations, right? So in this case, what you have to do is, after board examination, start with a revision of all the topics. So एक दिन में 4 टॉपिक रिवाइज करो, because अब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, आपके पास पूरे के पूरे 24 आवर्स है. You don't have to do anything else. Okay? So बोर्ड एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं, तो एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक रिवाइज करो and give yourself 1 week, maximum 10 days, and finish with the revision of all the topics. अब रिवीजन में समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो, कौन सा टॉपिक अभी तक याद है, कौन से कंसेप्ट्स फेड आउट हो चुके हैं, कितनी कैलकुलेशन टेक्निक्स याद हैं, कितना फास्ट हो, कितना स्लो हो, ये सारी चीजें पता चलेंगी, राइट? देन वंस रिवीजन इज ओवर, देन वी विल बी हेल्पिंग यू इन रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग्स with the practice questions that will be giving you in one shot and marathons. So one shot में generally हम क्या करते हैं, we pick up 1 or 2 topics and उनके बारे में हम discussion करते हैं from the very beginning, so that the students who have started their preparation उनका भी फायदा हो जाए, the students who have already done their preparation उनका भी फायदा हो जाए with the revision of concepts as well as questions. Now marathons will be bombarding you with a lot of questions, right? So this is what you'll have to continue. Then after that, the end, the last
few days. So ये कहावत तो सुनी होगी ना, अंत भला तो सब भला, right? So towards the end what you have to do is you don't have to be overconfident, right? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि एग्जाम से 15 दिन पहले 20 दिन पहले भैया एकदम से कंप्लेसेंट होके बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके बैठ जाते हैं कि भाई अब तो हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, हमारे तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू गिव मॉक पेपर्स, सेक्शनल टेस्ट में सब कुछ आता तो है, मार्क्स तो आ ही रहे हैं, सो मॉक की क्या जरूरत है या फिर और प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? आई एम नॉट आस्किंग कि एकदम लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है, बट पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, यू कैन नॉट लूज दैट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लोड अपना कम करते रहो। इफ यू हैव रीच्ड एट अ पर्टिकुलर स्टेज जहां पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, बट उस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है वहां पे आके पढ़ाई को। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ the preparation, the test series. So you will have to write the mock papers no matter what. Okay, अब mock papers में करना क्या होगा? So this is very important thing about the mock papers. ये 4 words है ना, इनको रट लो. Okay, so before the mock you will have to make a strategy to attempt that mock. A strategy can be, I'll start with my strong areas. Okay, देन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम छोड़ देंगे, बिकॉज टाइम लिमिट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने हैं. सो लाइकवाइज यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज व्हिच विल बी गोइंग इन योर माइंड, व्हिच यू विल अप्लाई वन बाय वन एंड देन विल बी एबल टू फिल्टर, शॉर्टलिस्ट अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ. स्ट्रैटेजी बनाया, टेस्ट दिया, ऑब्वियसली टेस्ट में स्ट्रैटेजी वर्क किया या नहीं किया वो उस मोमेंट पे पता चलेगा आपको, राइट? काफी बार ऐसा होता है हमने स्ट्रैटेजी बना लिया बट टेस्ट स्टार्ट किया, हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करना भूल गए. सो दिस इज ऑल्सो बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू. टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना है. एनालिसिस के दौरान आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है, आपके एरर्स क्या है. सो बेसिक सिली एरर्स है कैलकुलेशंस में, फॉर्मूला भूल गए हैं, फॉर्मूला गलत याद है, ठीक है. सो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो यू विल कम अक्रॉस while you will be doing analysis. Analysis के बिना टेस्ट अधूरा है, right? Analysis किया and then ये तीनों स्टेप्स को रिपीट किया. एनालिसिस करने के बाद एक और नया स्ट्रैटेजी, रिफाइंड स्ट्रैटेजी आएगी, फिर टेस्ट, फिर एनालिसिस, देन रिपीट, न्यू स्ट्रैटेजी, रिफाइंड स्ट्रैटेजी. जरूरी नहीं है हर बार नया स्ट्रैटेजी आएगा, रिफाइंड स्ट्रैटेजी भी आ सकता है. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज, इफ यू विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स the plan that I have explained to you, then definitely you will be able to achieve that wonderful position in any of these examinations, right? तो यहीं पे ही रुकते हैं and देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, right? So I'll meet you during the classes and you will tell me कि ये स्ट्रैटेजी काम आ रही है या फिर नहीं आ रही. All the very best.